Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. The topic that we are going to learn today is importance of acoustic. In this topic you will learn what is acoustic, what is meant by acoustic protection, what is reverberation, and is there any difference between reverberation and echo? To answer all these questions, let's proceed to our topic. First of all, we need to know what is acoustic. Acoustic is defined as the science in which we study mechanical properties of sound through solids, liquids, and gas. You know, students, when something vibrates, sound produce, and sound need medium to travel. If there is no medium, there is no sound. The acoustic is the branch of science that is related to the scientific study of sound. Okay, when the sound travels through solid, liquid, and gas. Now, what is acoustic protection? The technique used to absorb undesirable sounds by soft and porous surfaces is called acoustic protection. ये वो टेक्निक है स्टूडेंट्स जिसको यूज करके हम अनडिजायरेबल साउंड को एब्जॉर्ब करवा देते हैं, लेकिन कैसे? बाय यूजिंग सॉफ्ट एंड पोरस सर्फेसिस. You know the meaning of soft and what is meaning of porous surfaces? A surface that contains small pores is called porous surfaces. तो हम क्या करते हैं, सॉफ्ट और पोरस सर्फेसिस को यूज करके जब हम अनडिजायरेबल साउंड को एब्जॉर्ब करवा देते हैं तो ये टेक्निक क्या कहलाती है, एकॉस्टिक प्रोटेक्शन. लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाई वी नीड एकॉस्टिक प्रोटेक्शन. द आंसर इज दैट यू नो sound show property of reflection, which is also called echo. You have learned in the previous lectures what is echo. So what kind of surfaces show more reflection and what kind of surfaces show less reflection? If the surfaces are rigid plus smooth, there is more reflection. But if the surfaces are soft and irregular, the reflection is less in that case. Because irregular surfaces can absorb sound, while the rigid surfaces do not absorb sound, so they show more reflection as compared to irregular surfaces. Now, how to do acoustic protection? Soft and porous materials such as draperies and rugs absorb large amount of sound energy and thus quiet echoes and softening noise. हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल्स को यूज करते हैं, जैसे कि पर्दों का सेट लगा लिया अपने रूम में, इसके अलावा हमने कालीन बिछा दी नीचे. इससे क्या होता है कि जब हम उस रूम में अगर ऊंचा भी बोलेंगे तो क्या होगा, साउंड सारी की सारी इनके अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि कालीन और ये जो पर्दे हैं इनके अंदर पोर्स होते हैं छोटे छोटे. क्योंकि ये पोरस मटेरियल्स हैं तो ये साउंड को अपने अंदर क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो फिर हमें इको भी सुनाई नहीं देती और नॉइज भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है. इसलिए इन सर्फेसिस का क्या एडवांटेज है कि जब हम इन सर्फेसिस को नॉइजी प्लेसेस में यूज़ करते हैं तो वी कैन रिड्यूस द लेवल ऑफ नॉइज पोल्यूशन. लेकिन अब ऐसा भी नहीं करना कि हम इन सर्फेसिस को इतना ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर लें, मतलब अपने कमरे के छत पे, दीवारों पे, फ्लोर पे, हर जगह हम इन सर्फेसिस को इतना ज़्यादा यूज़ कर लें कि बिल्कुल ही साउंड क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए. और अगर हमारी क्लासरूम है वो बड़ी क्लासरूम है तो ये ना हो कि लास्ट स्टूडेंट तक लेक्चर जब डिलीवर हो रहा हो तो साउंड वहाँ तक ट्रैवल ही ना कर पाए और हमें एडवांटेज की बजाय डिसएडवांटेज हो जाए. इसलिए हमें इनको एक बैलेंस क्वांटिटी में यूज़ करना है. नाउ sometimes students we need to face another phenomena that is called reverberation. What is reverberation? Reverberation का क्या मतलब है? इसका मतलब है आवाज का गूंजना. जब आप किसी बड़े हॉल में चले जाएं, बादशाही मस्जिद में या आप ताजमहल में या इसके अलावा किसी बड़े हॉल में चले जाएं, तो क्या होता है, आप जब वहां पे जाके बोलते हैं तो आपकी आवाज गूंजती है लाइक दिस. अब ऐसा क्यों हो रहा है?
ऐसा इसलिए होता है कि sometime when the sound reflects from the walls, ceiling and floor of the room, the reflecting surfaces are too reflective and the sound become garbled. This is due to the multiple reflections called reverberation. होता ये है कि जब आप उन बड़े हॉल्स में जाके बोलते हैं तो क्या होता है कि उन हॉल्स के फ्लोर, सीलिंग और जो आपके पास वॉल्स हैं उनकी सर्फेसेस इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होती हैं कि आपका जो साउंड है वो गार्बल्ड हो जाता है, मतलब मिक्स अप हो जाता है ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, एंड दिस इज कॉल्ड रिवर्बरेशन. ओके, एंड द ड्यूरेशन टू विच साउंड परसिस्ट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन टाइम. मतलब जितनी देर में वो आवाज़ गूंजती है वो ड्यूरेशन जो है उस साउंड का, दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन टाइम. Students, we called reverberation as multiple reflection of sound. There is one more question. Is there any advantage of reverberation or not? Yes, there is advantage of reverberation because when we design the lecture halls, auditorium or theater halls, a balance must be achieved between reverberation and absorption. And it is often advantageous to place reflective surfaces behind the stage to direct sound to the audience. रिवर्बरेशन का हमें फ़ायदा कब होगा? जब हम रिवर्बरेशन में एंड एब्जॉर्प्शन में एक बैलेंस कंडीशन रखेंगे. अब वो बैलेंस रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपने देखा है कि ये लेक्चर हॉल्स हैं या इस तरह के कोई कॉन्फ्रेंस हॉल हो जिसमें स्टेज पे एक बंदा खड़ा होकर कुछ बोल रहा है और हम चाहते हैं कि उसकी आवाज़ लास्ट पर्सन जो लास्ट चेयर पे बैठा है उस तक भी आवाज़ जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा? रिवर्बरेशन और एकॉस्टिक प्रोटेक्शन में एक बैलेंस कंडीशन रखनी होगी. उससे क्या होगा कि जब वो पर्सन बोलेगा जो स्टेज पे खड़ा है तो साउंड रिफ्लेक्ट होके लास्ट पर्सन तक भी जाएगी. और ऐसा तभी पॉसिबल है अगर इन दोनों में, रिवर्बरेशन में और एकॉस्टिक प्रोटेक्शन में, बैलेंस हो. और वो क्यों हो? कि आवाज़ गूंजे भी और जो अनवांटेड साउंड है वो एब्जॉर्ब भी हो जाए. और इस तरह लास्ट बेंच तक हमारे पास क्या होगा? साउंड रिफ्लेक्ट होके पहुंच जाएगा. And students, to make the balance between acoustic protection and the reverberation more comfortably, we generally design the ceiling of the lecture halls and conference hall curved because the sound after reflection from these curved ceiling may reach all the corners of the halls, and sometimes the curved soundboards are placed behind the stage so that the sound after reflection distributed evenly across the halls. Students, हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर जो लेक्चर हॉल्स है या कॉन्फ्रेंस हॉल है उनकी जो छतें होती हैं, अगर आपने मस्जिद में भी जाके देखा हो तो ज़्यादातर क्या होता है कि उनकी छतों को क्या कर दिया जाता है? कर्व्ड बनाया जाता है ताकि जब साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस हो तो आपको पता है कि साउंड तो हर जगह पे ट्रैवल करेगा, तो इसलिए जब साउंड सीलिंग पे जाए तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके पूरे जो हॉल के कॉर्नर्स हैं सब तक वो क्या करे? पहुँच जाए. और इसी तरह जो कर्व्ड साउंड बोर्ड्स हैं उनको भी रखा जाता है बड़े बड़े हॉल्स में जहाँ पे साउंड का सोर्स है, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उसके बैक साइड पे रख दिया जाता है ताकि वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद पूरे हॉल में इवनली क्या हो जाए? डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. Now at the end of lecture, students, we discuss the difference between reverberation and echo. So what is the difference between echo and reverberation? If we hear the reflected sound more than 0.1 second duration, then it is called echo. But if the reflected sound is heard a time limit less than 0.1 second, then this kind of reflection is called reverberation. Echo में और reverberation में इसी बात का डिफरेंस है कि ये जो टाइम लिमिट है, अगर हमें अपनी साउंड रिफ्लेक्ट होने के बाद टाइम अगर हमें लग रहा है 0.1 सेकंड से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वो रिफ्लेक्टेड साउंड इको कहलाएगी. लेकिन अगर 0.1 सेकंड से पहले ही हमें आवाज़ सुनाई देना शुरू कर दिया है तो फिर वो हमारे पास क्या कहलाएगी? रिवर्बरेशन कहलाएगी. आई होप स्टूडेंट्स you got it
and this lecture helps you to understand the concept of acoustic protection and also the difference between echo and reverberation. This is your home task. The review question 11.17. Describe the importance of acoustic protection. The answer of this question is in the topic that we have discussed. And students, if you have any query related to today's topic, you can ask me and learn it properly. Thank you and Allah Hafiz.